सो रिफ्लेक्शन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई रे एक स्मूथ सरफेस पे को हिट करती है तो इट बाउंसेस ऑफ। ये जो रे आ रही है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, जो वापस जाती है इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दैट्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड देन देयर वाज दिस वन इन्वेस्टिगेशन about reflection, like how can we investigate reflection. All right, today we're going to do refraction. Refraction is very simple, just like reflection. If you want to put it into simple words, it's just the bending of light. और ये क्यों होती है? Due to change in media. Due to, मैम, yes, हमारी आई में रिफ्रैक्शन होती है ना? that's right. क्योंकि लाइट एयर से, जो कि एक गैस है, आपकी आई में जाती है, दैट इज सेमी लिक्विड और सॉलिड, तो मीडियम चेंज हो जाता है, गैस से लिक्विड सॉलिड में जाती है, तो लाइट बेंड होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन. So a ray diagram for this will look like this. अगर आपके पास, let's say, this is your boundary, this is air, and this is water. और एक रे आती है, the ray that is coming and the ray that hits the boundary is called incident ray, and it hits the boundary. Boundary क्या है? It's the change of medium. Air से water में गई है, तो light क्या होगी? It will bend. For that, I'm going to draw a normal first. Normal क्या होता है? जहां पर आपकी रे बाउंड्री को हिट करी है, वहां पे आप सरफेस या बाउंड्री से एक 90 डिग्रीज लाइन एक्सटेंड करते हैं, डॉटेड लाइन. That is your normal. And the ray will bend something like this. Like that. Okay? अब एंगल्स आपने देखने हैं. इंसिडेंट रे से नॉर्मल का जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइक वी स्टडीड अर्लियर. और रिफ्रैक्टेड रे, let me write these as well. This is your incident ray. This right here is your refracted ray. और ये पर्पल वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस. And this one right here is your angle of refraction. And you will notice कि रिफ्रैक्शन में एंगल्स सेम नहीं होते. जब एंगल्स सेम होते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जब एंगल्स डिफरेंट होते हैं तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. ओके, एंड रिमेंबर कि जब आपकी रे लेस डेंस से डेंसर मीडियम में जाती है तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है. ओके. मैम, तो अगर मीडियम डिफरेंट हो लेकिन डेंसिटी सेम हो तो फिर रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी? इट्स नॉट पॉसिबल. ओके मैम. डेंसिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे पैक्ड है, उनकी पैकेजिंग. एयर के पार्टिकल्स farther apart होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं. So it's not possible that the density of two media is same. Okay. यस मैम. So here, when it's going from less dense to denser medium, क्या होगा? Ray refracts towards the normal. And when it's from denser medium to less dense,
ray refracts away from normal. Away from normal. Right there. Okay. मैम जब yes, इसमें एंगल आई और एंगल आर वैसे इक्वल लग रहे हैं. here. यस. So it might look like it, लेकिन they are definitely different. Okay. अगर आप मैम डायरेक्शन की वजह से भी. नहीं, डायरेक्शन की वजह से नहीं. आप यहाँ पे अपना प्रोट्रैक्टर इस तरह रखेंगे and you will measure your angle here, this thing. Okay. So if this is your protractor, तो प्रोट्रैक्टर पे दो एंगल की रीडिंग्स होती है. एक जीरो यहाँ से शुरू हो रहा होता है और एक जीरो यहाँ से शुरू हो रहा होता है. ओके. सो अगर आप जीरो अपनी रीडिंग यहाँ से शुरू करें तो आपका ये एंगल होगा. फॉर दिस केस आप क्या करेंगे, आप अपना प्रोट्रैक्टर इस तरह रखेंगे. ओके. और आपको कौन सा, सॉरी वेट, आई एम गोना हैव टू फ्लिप. ओके. आप क्या करेंगे, अपना प्रोट्रैक्टर ऐसे रखेंगे. सो मे बी यू कैन मेजर दिस एंगल. ओके. और आप उसको जब 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको अपना रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा. ओके. यस मैम. So when it goes from less dense to denser medium, it refracts towards the normal. और जब वो denser से less dense में जाती है, अगर रे ऐसे होती, तो it, wait, so let me draw, actually just trace it here. अगर water से रे जाती, like that, तो क्या होता? It would have refracted away from normal. So उस case में, if the ray was like this would have been your angle of incidence and this would have been your angle of refraction, and definitely angle of incidence here is less than the angle of refraction, and in this case angle of incidence is greater than angle of refraction. ऐसा क्यों है? जब आपकी रे लेस डेंस से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, और अगर वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया. सो योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और जब वो डेंसर से लेस डेंस मीडियम में जा रही है तो रे इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. So your angle of incidence is less than your angle of refraction. Are these points clear? यस मैम. Okay. Okay, there's one more point here. कि अगर आपकी रे सरफेस को या बाउंड्री को 90 degrees पर hit करती है. For example, if you have this scenario that this was your boundary, this is air, this is water. If your surface hits the boundary at 90 degrees angle like that, it will not be refracted. It will just go on like that. So in this case, you have no refraction. Clear? मैम इसकी क्या रीजन है? It's just that if your ray is perpendicular to the surface, then it does not refract. It doesn't bend. So the मैम reasoning here is the ray being perpendicular to the surface. Yes? मैम इस केस में हमें थोड़ी सी साइड पे दिखेगी टूटी हुई अगर, लेकिन What does that mean? मैम जिस तरह हम फॉर एग्जांपल ग्लास के अंदर जब हम खुद प्रैक्टिकल करके लेजर डालते हैं तो मैम वो थोड़ी सी टूटी हुई लगती है, यानी थोड़ी उसके बाद से शुरू होती है. Yes, that's when the ray is at an angle. जब स्ट्रेट होगी तब ये नहीं होगा.
No, if you are pointing it directly from above, then refraction won't happen. Okay, ma'am. All right. Now we're going to look at an experiment to carry this out in a lab. It's very simple, nothing complicated, and it's important for paper 5, I believe. ATP, I don't know if that's paper 5 or paper 4. So investigating refraction. आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक वाइट पेपर लेना है. वाइट पेपर क्यों हम ले रहे हैं? द रीजन इज ताकि जो भी हम अपनी अभी ड्राइंग करेंगे इस पर वो हमें अच्छी तरीके से नजर आ सके, और इस वजह से भी कि आपका इक्विपमेंट उस पर पड़ा होगा and everything will be clear. So take a white paper, take a ray box. Ray box एक like equipment है, टूल आपका जो कि रेज जिसमें से निकलती हैं. So here's your ray box. Let's place it here. So this is your ray box. And on your paper, place your prism. I'm going to attempt to draw. Oops. Wow. I'm just going to draw that. So this is the prism. Okay, so here you have a prism. आपकी जो आपका ray box है, you're going to turn it on, and the ray box will, of course, leave a laser like that. एक रे निकलेगी उसमें से, क्योंकि वो एयर से एक सॉलिड में जा रही है, तो क्या होगा, आपकी रे बेंड होगी. मीडियम चेंज हुआ है तो इट विल बेंड. It will bend something like that, maybe. Let me draw a dotted line to differentiate or like I always forget that word. To like amplify the bending here. और जब वो वापस उसमें से like prism में से जाएगा, so it will be the same. Wait. Like that. Needs to be the same angle. Just like that, okay? Acha, I'll repeat that. It's a very simple investigation. Let me do some labeling. Here you have a sheet of paper. This is your glass block. Glass block. That's your ray box. All right, so this was the experiment. Now, how are you going to write this down? You're going to say that, wait a second, forgot something, I guess. Let me see if the points are, wait.
Okay, so place your block, this like glass block, on a sheet of paper, and what you're going to do is to carefully trace the lines first. And why are we doing that? We're going to trace it. Let me use a black pencil here. The reason we're going to trace this is to specify where the medium changed, right? आपने क्या करना है, इधर दो लाइंस लगा लेनी है ताकि हमें ये भी पता चले कि आपका मीडियम कहाँ पे चेंज हो रहा था. Wait, let me go through the process first and I'll tell you the steps of writing it. I'll repeat the process first. आपने क्या करना है, एक पेपर का पीस लेना है, उस पर अपना एक ग्लास ब्लॉक रखना है, रे बॉक्स ऑन करना है तो उसमें से ऐसे रे जाएगी. ओके, आपने क्या करना है, आपने इस ब्लॉक की साइड्स पे दो लाइंस लगा लेनी है. ओके, और जहां से रे जा रही है उसको ट्रेस कर लेना है. Let me duplicate this to specify the tracing part. Here. आपने क्या ट्रेस करना है, आपने अपने वुडन ये ग्लास ब्लॉक को ट्रेस कर लेना है, फिर आपने जो रे है उसको ट्रेस करना है here or here. Now of course you won't be able to trace this line क्योंकि उस पे तो ब्लॉक पड़ा हुआ है, right? तो फिर बाद में आपने अपना ब्लॉक रिमूव कर लेना और make another copy here. Okay, then you're gonna remove this block and you're gonna trace this line as well. आपने उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना. So you will have your whole diagram. फिर आपने क्या करना है, इन जंक्शंस पे, इन पॉइंट्स पर जहां पे बेंडिंग हो रही है वहां पे you're going to draw a 90 degrees line, जिसको हम नॉर्मल कह रहे हैं अभी तक. Okay, you're going to draw a normal, looks something like that. It has to be perpendicular to your boundary. Let me make it dotted. Then you're going to use your protractor to measure these angles. ये incident ray, ये और ये angle of incidence हो जाएगा, ये angle of refraction हो जाएगा. फिर ये आपका इस साइड पर incident ray हो जाएगी और ये आपका angle of refraction हो जाएगा. Why am I calling this the incident? Because if you're taking this the boundary, the ray is hitting this boundary, so ये incident ray बन जाएगी. Okay? आप देखेंगे कि ये angle जिससे ray is going into the block is equal to the angle with which the ray is coming out of the block. So this angle must be equal to that one. Another reason is कि यहाँ से air से वो glass में जा रही है और फिर glass से दोबारा air में आ रही है. So these two angles are going to be the same. Let me repeat the process. एक white sheet of paper लेनी है. Why am I saying a white sheet of paper? So that everything's more clear. ray box on करें, रे एक निकलेगी और वुडन ब्लॉक में से गुजर के बेंड होकर दोबारा बाहर आ जाएगी. आपने क्या करना है, फिर आपने ट्रेस करना है, अपने ब्लॉक को ट्रेस कर लेना है और ये जो दो रेज हैं इनको ट्रेस कर लेना है. फिर यू कैन रिमूव द ब्लॉक और आपने अपनी इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है तो वो आपकी अंदर की डायग्राम आ जाएगी, राइट, इसके मिडल पार्ट की. देन यू कैन ड्रॉ नॉर्मल्स परपेंडिकुलर टू द बाउंड्रीज और आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन मेजर कर लेना है. एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से. देन यू कैन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट. फिर आपने क्या करना है, अपने रे बॉक्स को थोड़ा सा मूव कर लें. मे बी यू मूव द रे बॉक्स हियर एंड इट्स इंसिडेंट एट दिस एंगल नाउ. अगर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे. इज देयर एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन सो फार? मैम हमने ये नॉर्मल 2 दफा क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि पहले तो हमने नॉर्मल की एक लाइन ड्रॉ की थी. क्योंकि वहां पे एक बाउंड्री थी. यहाँ पे अब दो बाउंड्रीज हैं आपके पास. एक बाउंड्री है एयर से सॉलिड में जाने की और दूसरी बाउंड्री है सॉलिड से दोबारा बाहर एयर में आने की. Clear? Yes, ma'am. Okay, so now I'm just going to say it out loud, the steps. I'm not going to write that down because it's going to take a lot of time.
So maybe after class you can watch the recording and write that down yourself. I say these steps are very simple. It shouldn't be hard to memorize them just like that. So the steps are that you place the block on a sheet of paper and carefully trace its outline with a pencil. Then turn on the ray box and aim the beam at one side of the block. On the paper, you're going to mark a few things. Firstly, a point on the beam near the ray box, a point where the beam first enters the block, like here and here, the point where the beam exits the block, and a point along the exiting beam approximately 5 centimeters from the block. Why am I not tracing it like that and just drawing points so that if I have this point and this point, I can just connect it, and that will form my incident ray. So at each of these points, draw a dashed line perpendicular to the block's edge, which will be here and here, the normals. Okay? So then you're going to remove the block and connect the mark points using 3 straight lines, this one, and that one. Then you're going to place a block within its traced outline and repeat the process for a beam incident at a different angle. And why are we taking a different angle? So that we can get different angles of refraction. So we're going to repeat this process, same process for different angles of incidence to get different angles of refraction. और फिर हमने क्या करना है अपने सब readings को एक table में record कर लेना है. So you're going to have your angle of incidence here, angle of refraction here, and you're going to record all of these readings in a table, and you will see a relationship between angle of incidence and angle of refraction. Any confusion or question? No, ma'am. All right, great. Okay. Let's see, what else do we have? Also, take the errors into account and safety considerations as well. Again, I'm not going to write it down, but you should know that there are 2 types of errors, systematic error and random error. Let me just write it down, actually. So you have, I think I've covered the topic of errors in physical quantities, right? No, ma'am. I think so. Maybe you can go back and look at the recording if you're not sure, but I'm so sure I did cover errors. मैम आपने पैरेलक्स और परपेंडिकुलर एरर बताया था. Yes, parallax and perpendicular. Yes, I said that those were types of errors. हमारे पे systematic errors होते हैं or random errors होते हैं. Let me see. If I haven't, that's okay. I'll repeat it. मैम Maybe it's errors just आपने introduced. बताए हुए हैं. Okay, that's great then. We have systematic and random. Systematic error होता है जो कि आपके system या instrument, equipment, tool जो भी आप कहना चाहें उसमें हो. और random error होता है जो आप जब experiment कर रहे होते हैं तो आपसे introduce हो जाए. So for systematic error, make sure you're using like drawing correct lines. For random errors, make sure you use a sharp pencil and mark the points correctly. Why am I saying to use a sharp pencil? ताकि आपकी drawing जितनी accurate होगी आपका angle उतना बेहतर measure होगा. For example, अगर आप अपना protractor use कर रहे हैं और उस पे एक line ये है thin है तो उस पे angle read करना आसान है. लेकिन अगर आपने इतनी thick line लगा दी है तो आपको angle नहीं पता चलेगा ठीक से कि उसमें maybe 1, 2, 3, 4 angles cover हो रहे हैं. So it won't be accurate enough. So draw very sharp lines. Then for safety, so make sure you look at the safety considerations as well. Make sure that the ray box is directing away from you and stand behind the ray box so that the rays do not accidentally get into someone's eyes and damage them. Also, make sure you keep all liquids away from your electrical equipment and paper to just avoid any mess.
Any question or confusion? No, ma'am. Okay, so for your paper, make sure you're comfortable with the equipment that you need and the methodology of how you're going to use the equipment and how you'll trace lines and the analysis, like why are you doing this? You're doing this to investigate refraction to show that the angle of incidence is different from the angle of refraction. मैम Yes? ये रे बॉक्स के अंदर से लेजर लाइट निकलती है? Yeah, it could be laser or it could be visible light. I think it depends. Yes, ma'am. Acha, next our topic is Snell's law. It's a very important formula. Okay, what's Snell's law? It's very simple, nothing complicated. It's just, let me write down the formula. Firstly, it just says that the refractive index, I'll tell you what that is equal to sine of the angle of incidence divided by the sine of the angle of refraction. This is the main thing. And now let me go back to the basics. Okay. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका आपको पता होना चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है जो कि डिपेंड करता है कि एक मटेरियल में स्पीड की लाइट की स्पीड क्या है. Okay, it's always less than the speed of light in vacuum, but it's just a number that tells you that doesn't tell you, but it's related to the speed of light in that material. हर material का different मैम वो refractive index. फ्रीक्वेंसी नहीं होती? Frequency is a different thing. Refractive index tells you, like, it depends, or it's just related to the speed of light in that material. मैम It's a different thing. Yes? ये वो है जो मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कितनी स्पीड से लेजर हिट कर रहा है ऑब्जेक्ट को? No. It's different. स्पीड ऑफ So it just the point about speed of light is just there to give you an idea of what it is. असल में refractive index होता है कि, how do I explain it? So it's like a number that indicates how much light slows down when it enters through a medium, okay, compared to its speed in vacuum. ये एक ratio है. Let me write down the definition so that will make more sense. It's a Ma'am? ratio. Yes? ये डेफिनेशन समझ आ रही है. Yes, okay. So it's a dimensionless number. And why is it dimensionless? Because it's a ratio. Ratio that indicates how much light slows down when it travels through a medium compared to its speed
in vacuum. And since you see कि ये एक रेशियो है जो कि डिफाइन करता है कि कितना स्लो डाउन हो रही है compared to its speed in vacuum. So we write it like this: n is equal to c by v. C is the speed of light in vacuum, and v is the speed of light in that medium. So it's a ratio. Let me write that down as well. C. So this is speed of light. मैम ये हमेशा सेम होगी हर ऑब्जेक्ट में? हर ऑब्जेक्ट की different refractive index होता है. नो मैम, ये इसमें वैक्यूम में. Yes, vacuum में speed of light same होती है. It's very close to basically the same as the speed of light in air. Speed of light in the medium. क्योंकि एक रेशियो है, ऊपर भी मीटर्स पर सेकंड है और नीचे भी मीटर्स पर सेकंड है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसकी कोई डिमेंशन या यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि डिनोमिनेटर ज्यादा था, राइट? यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में ज्यादा थी. So it means that light travels slower in that medium. And higher refractive index, what does it mean? That this number is smaller, right? अगर आपके पास एक नंबर है, ऊपर वाला फिक्स्ड है और डिनोमिनेटर जब स्मॉल होगा तब ही आपका ओवरऑल आंसर ज्यादा आएगा ना. So that means the speed of light in that medium is smaller or slower, basically. And that means it bends more when it enters it from another medium. For example, water का refractive index है 1.33, which means that light travels 1.33 times slower in water compared to vacuum. So does that make sense now? यस मैम, आपके पॉइंट की तो समझ आ गया, लेकिन मैम ये स्पीड ऑफ लाइट होता क्या है? लाइट की स्पीड. मैम कौन सी लाइट की स्पीड? वो जो light, लेजर लाइट थी, वो जिसकी बात कर रहे थे. all of those have the same speed. सनलाइट की और लेजर लाइट की सेम स्पीड होगी? I believe so. यस मैम. Okay. From what I know, laser is just light that is in a single beam or ray. और उसकी speed का laser से कोई ताल्लुक नहीं होता. Speed of light is just the speed of light, whether it's laser or the sun rays or whatever. Okay? यस मैम. So क्योंकि एक ratio है, the refractive index is always larger than 1. Always larger than 1. जो ऑब्जेक्ट जितना डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल डायमंड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. So diamond is optically denser, so it has a higher refractive index. So the point here is the more optically dense a material is, the higher its refractive index. Any question or confusion? नो मैम. Okay. Then we have this formula of Snell's law, which is that refractive index is the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Yeah, but I want you to remember one more thing. Let's take the example of our glass block.
This is a glass block. This is air. This is glass. And of course, this is air. Again, अगर एक ray आ रही है like that, I will draw a normal here for reference. Normal हमेशा आपका boundary से perpendicular होता है 90 degrees पर. So if it's going from less dense to denser medium, the ray towards the normal bend होगी कि away from the normal? Yes, ma'am. अगर आपकी रे लेस से डेंसर मीडियम में जा रही है तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Ma'am, towards the normal. That's right. So it's going to bend towards normal like that. And when it exits, तो उसका एंगल सेम होगा जो एंट्री वाली रे का था. Like that. Normal boundary से बनता है. So I have two boundaries, I have drawn two normals. So this right here is your angle of incidence. This right here is your angle of refraction. Okay? In this case, angle of incidence is more than angle of refraction. Okay? So what I want you to remember here, let me add that point here. जब less dense से denser medium में जाती है तो ray refracts towards the normal and it also slows down. I'll explain that. Why? और जब वो denser से less dense में जाती है तो it speeds up. Why does that happen now? आपने imagine करना है air को एक ऐसा कमरा जिसमें 3-4 लोग हैं और water को एक ऐसा कमरा जिसमें बहुत ज्यादा लोग हैं. And imagine that this ray is an athlete that is running. वो एक almost empty room से एक crowded room में enter होता है तो उसकी speed automatically कम हो जाएगी, right? Because there are more people here, so that person will have to find his way out of a crowd. इसी तरह जब ray आती है कम particles से crowded particles में तो उसकी speed कम हो जाती है and it bends its way to find it bends its pathway to find a way out. So that is why जब वो less dense से denser में जाती है तो वो slow down हो जाती है और जब वो denser से दोबारा air में जाएगी less dense में तो वो speed up हो जाएगी. Did I make myself clear there? Yes, ma'am. Okay. Just make sure that you use this formula correctly. आप sin को sin से cancel नहीं कर सकते. You can't find I by R by canceling the signs. That will be completely wrong. You have to firstly plug in sin I and then sin R and then find a ratio of those sine functions. Also, make sure that your calculator is in degrees mode because आपको जो angles given होंगे वो degree में होंगे और radians में नहीं होंगे. Radian is another unit for angle. So make sure आपका calculator degrees में है और radians में नहीं है. That was it for refraction and Snell's law. Alright, is there any question for this section? ये जो मैम ये वाला लॉ है इसका n और ये जो आपकी पहली वाली वैल्यू का n था इस फॉर्मूला का दोनों n सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. Yes, that's right. They're the same thing. मैम दो डिफरेंट फॉर्मूला है एक चीज के लिए. Yes, that's right. इसीलिए वो आपको इनमें से कुछ चीजें देंगे और आपको दोनों फॉर्मूलाज को इकट्ठे यूज करना होगा in the end. So maybe आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आपको उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में दी हो और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमें पता है दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन ऑलवेज. पहले आप इधर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे फिर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा और आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना होगा. यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लग इन करेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता होगा तो यहाँ पे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करेंगे. इसलिए आपको थोड़ा सा इसको रीअरेंज भी करना आना चाहिए
तो अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस टू सिंपलीफाई इट फॉर नाउ, तो आपको आई को आइसोलेट करना है. So what you're gonna do is take the sine r to that side directly first. ये हो जाएगा n sine r is equal to sine I. और I को isolate करने के लिए आप क्या करेंगे, you're gonna take your n sine r जो कि पहले ही वहां मौजूद था, this one, and then you're gonna bring this sine I, sine sorry not sine I, this sine to the other side. और आप इसको divide नहीं कर सकते, आपने करना है inverse इसका. So you're gonna write sine inverse sine r and sine r, and that will be the I. Don't worry, we're gonna do questions on this, so that will be even clearer, inshallah. For now, this is the concept. Is there any confusion? आपको No. दोनों formulas आने चाहिए, आपने इन दोनों को इकट्ठे use करना होता है. That's the main idea here.